Now today is application day. This is the last layer. Just I have mentioned a few more things. Look. See some functions of session and presentation layer also. Because as per your syllabus, there are only 4 layers. But mostly you study about OSI reference model, and in this model there are 7 layers. Okay. Now, what is the function of session layer? First thing, it establishes and maintains and ends a session. The first thing is, what is session? Anybody can explain? So its name is session and it controls session. But what is session? Sessions identify what? receive the data. Look. Then sessions. Okay, super. Look, when 2 nodes are communicating to each other, just take example of 2 nodes only. 2 nodes are communicating to each other, but for communication, there must be some protocol, some services, or anything. For example, just take an example of FTP.
Suppose there is a FTP server and FTP client would like to take some data from FTP server. Then there must be a connection between FTP server and client. It's okay. There is a physical connectivity, logical addressing. Both nodes are identifying to each other. But before transmission of data from FTP server to FTP client, there must be a session generated by FTP server as per the request of the client. Request जैसे ही करता है client, FTP सर्वर के तरफ से एक सेशन जनरेट होता है. ये बिल्कुल ठीक उसी तरीके से है, just like in an auditorium, if some speakers are speaking something about any topic, in that case, if somebody has raised his hand, so what happened? That viewer has raised his hand to establish a connectivity to the speaker. Then the speaker gives a proper attention to that particular viewer. Now there is a session between them. After establishment of the session, now communication start. So for every process, like in our example, FTP, it's okay. Maybe it is DHCP, maybe it is DNS, maybe it is your web server, anything, or simple any protocol like SMB, NFS. Session is required before transmission. And for establishment of this session, for maintaining this session, to end this session, to start this session, session layer is responsible. Getting my point? Now, session can be established with or dialogue. Dialogue can be viewed or cannot be viewed. देख भी सकते हो, नहीं भी. जैसे देखने का एग्जाम्पल तो ज्यादा समझ में आता है, तो अगर एक वैसा एग्जाम्पल लें तो बात कर लेते हैं. जैसे आप लोग एनी डेस्क यूज करते हैं, एनी डेस्क फॉर रिमोट एक्सेस. सपोज वन यूजर इज इन पटना, सेकंड यूजर इज इन दिल्ली. तो क्या होता है कि आप उस वक्त में, यू ऑल नो अबाउट इट, व्हाट इज टीम व्यूवर, एनी डेस्क और एनी एडमिन. आप कुछ आइडेंटिफिकेशन, कुछ क्रेडेंशियल्स डालने के बाद एक सेशन एस्टैब्लिश होता है, और उस एस्टैब्लिश सेशन के बेसिस पे फिर आप जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो टास्क आप परफॉर्म करते हैं. तो उस वक्त में एक डायलॉग बॉक्स दिखता है, एक कंफर्मेशन बॉक्स दिखता है. लेकिन बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जिसमें आपको कोई डायलॉग बॉक्स नहीं दिखाई. जैसे फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ DSC, if suppose that I am taking my own example, I came to the college and connected my machine to the network, office network, college network. In this case, my machine gets an IP address from the DHCP server automatically, because it is automatic process. In this case, I cannot see any session dialog, end session or establishment, nothing. But there is a connection. Means there is a session. Fine. Now, if there is a dialog, then there must be a dialog control. If a session has been established, in that case, that say on that session,
both nodes, source or destination, you can say, source and destination should be synchronized. सिंक्रोनाइज कहने का मतलब कि डेटा के ट्रांसमिशन के लिए अगर एक नोड डेटा ट्रांसमिट कर रहा है तो दूसरा उसे रिसीव करे, जिस रेट से डेटा ट्रांसफर हो रहा है उस रेट से रिसीव हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। इन केस थोड़ी भी गड़बड़ होती है, सेशन एंड हो जाता है, कनेक्शन लॉस हो जाता है। तो सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग मेंटेनेंस एंड एंड ऑफ अ सेशन. It can be with dialogue and without dialogue also. Okay? Now, any question from session layer? This is a very small layer. No question. Now, presentation. What is the basic function of presentation? Look, at the application layer, data is generated by any keystroke, by scanner, by anything. But when data is generated, and data has to be kept or has to be transferred from one machine to another machine, उसे स्टोर करना है या एक मशीन से दूसरे मशीन में ट्रांसफर करना है, ऐसे केस में जैसा हमने इनपुट किया वैसा ही डेटा ट्रांसफर हो, इट इज नॉट नेसेसरी। तो डेटा के साथ में कुछ चेंज होता है। अब चेंज होने के पीछे बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं। ये चेंज सिक्योरिटी पर्पस से हो सकता है कि नहीं भाई डेटा जो है वो प्लेन टेक्स्ट मोड में नहीं हो, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू साइफर टेक्स्ट और एनक्रिप्टेड। ठीक है, डेटा की साइज जो एक्चुअल है वो रिड्यूस हो जाए, जिससे डेटा लो बैंडविड्थ के भी सिग्नल पे और लिंक पे जो है ट्रांसफर किया जा सके। डेटा को स्मॉल स्टोरेज में स्टोर किया जा सके। इसलिए प्रेजेंटेशन लेयर डेटा के फॉर्म में चेंज करता है। नेम इज इन अ प्रेजेंटेशन, इट्स ओके। एक यूजर ने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग डेटा को इनपुट किया, बट एक सिस्टम किस तरीके से उस डेटा को मैनेज करेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेजेंटेशन। That's why the first point is character code translation from ASCII to EBCDIC code. Now you all know about it because in the beginning you have studied about it. Now second thing is data compression. Now what is compression and what is encryption? These are two terms. Anybody can explain about compression of data or compression term? कोई बता सकता है? सर कंप्रेशन सर की डेटा का साइज में रिड्यूस करना सर। हाँ राइट, डेटा के साइज में रिड्यूस करना। बट हाउ डज इट कम? कैसे आता है, कैसे होता है? जैसे ये एक सिंपल डेफिनेशन है कि डेटा कॉम्प्रेशन का मतलब साइज रिड्यूस करना और एन्क्रिप्शन का मतलब कि और उसके फॉर्मेट को चेंज कर देना, रीडेबल डेटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में डाल देना। सर हो सकता है ऐसा कि जैसे सर मल्टीप्लेक्सिंग होता है 1 to many और many to 1, तो सर वहाँ पे मल्टीपल डेटा को किसी एक डेटा में कन्वर्ट किया जाता होगा, छोटा सा डेटा बनाया जाता होगा। राइट सर राइट, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यूज होता है। बट हैव यू हर्ड अबाउट shorthand? Especially this tool is used by
those students who are preparing for the government Yes, job, sir. shorthand. I have also done. What happens in a case of shorthand? Suppose that I'm just taking an example. You are just noting down the speech of Prime Minister. If you have to write Prime Minister, Prime Minister, Prime Minister many times, you can write only PM. Yes, sir. Or P, or you can choose some symbols also for frequently used data, for frequently used word. Like a keyword, we create a keyword Keyword. to Right. represent something. Right. Keywords. इसलिए शॉर्ट हैंड सीखने वाले लोग पहले उस कीवर्ड की प्रैक्टिस करते हैं. I have also done some practice in the initial, when I was in graduation or 12th. तो अभी तो मैं भूल गया कैसे, तो थोड़ा थोड़ा सीखा. और सर ऐसा भी होता है कि बहुत पूरा लाइन लिखने से अच्छा एक मीनिंगफुल वर्ड लिख लेते हैं उसके लिए, और फिर बाद में कुछ सेंटेंस उस वर्ड के अकॉर्डिंग बना देते हैं. राइट. फिर उसे जब जरूरत होती है, क्योंकि वो सारे कीवर्ड जो भी शॉर्ट्स यूज किए हमने, वो सारे शॉर्टकट्स हमारे माइंड में होते हैं, और फिर हम उसी को मतलब एक्सपैंड कर लेते हैं. Yes, तो sir. मान लो फॉर एग्जांपल इट इज अ 30-minute स्पीच एंड वी हैव नोटेड डाउन इट एंड विद इन 1 or 2 पेज 3 पेज, और जब उस 30 मिनट के स्पीच को एक्सप्लेन करने जाते हैं तो इट बिकम्स 5-10 पेजेस 20 पेजेस स्पीच. It depends upon your shorthand capacity. ठीक है. ठीक ऐसा ही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन केस ऑफ कंप्रेशन. यही वजह होती है कि जब कंप्रेशन टास्क आप परफॉर्म करते हैं, आपके डेटा का साइज रिड्यूस हो जाता है. लेकिन आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि जब आप कंप्रेस करते हैं तो फिर उसे डिकम्प्रेस करने का भी ऑप्शन होता है, और जब आप डिकम्प्रेस करते हैं तो फिर से उसी साइज का डेटा आ जाता है. Yes, sir. और इस केस में आप अगर किसी थर्ड पार्टी टूल का या किसी भी टूल का यूज करते हैं तो आपको डिकम्प्रेस करने के लिए भी सेम उसी टूल की जरूरत होती है. ठीक वैसे ही जैसे दो शॉर्ट हैंड वाले बंदे अगर एक साथ खड़े होकर स्पीच को नोट डाउन कर रहे हैं, तो जब उसे एक्सपैंड करना हो, फुल स्पीच लिखनी हो, तो वही बंदा लिख सकता है. अगले बंदे के लिए फिर वो डिफिकल्ट हो जाएगा समझना. हो सकता है कुछ कोड को वो ना समझ पाए, कीवर्ड को न समझ पाए. ठीक है. तो यही चीज होती है जब आप डिफरेंट कंप्रेशन टेक्निक को यूज करते हैं. तो टेक्निक्स में कीवर्ड का वेरिएशन होने की वजह से आपसे सेम की टेक्निक या सेम टूल का मतलब डिमांड होता है कि इस टूल के हेल्प से ही वो डिकम्प्रेस होगा. ये कंप्रेशन डिकम्प्रेशन का जो टास्क है, ये टास्क परफॉर्म होता है प्रेजेंटेशन. इसका एक एग्जांपल आप करके देखिएगा इसको प्रैक्टिकली, कि सपोज दैट एक फोटोग्राफ ले लो, और उस फोटोग्राफ को कंप्रेशन में डालो, इसे कंप्रेस करना है. वो ये नहीं करना है उसका क्या बोलते हैं, डीपीआई चेंज नहीं करना है, उसे कट नहीं करना है. जैसा फोटो है वो वैसा ही रहे, उसकी पिक्चर क्वालिटी में फर्क ना पड़े, और वो कंप्रेस हो जाए. पता चलेगा कोई कंप्रेशन नहीं, बिकॉज अ सिंगल फोटोग्राफ इज अ सिंगल करेक्ट. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको कंप्रेस करने का मतलब यही समझते हैं उसके डीपीआई को कम कर दो, तो वो तो आप क्वालिटी रिड्यूस कर रहे हैं. अब यही चीज एक स्पीच पे डालो. तुम एक काम करो, द काउ पे ए से लिखो फॉर एग्जाम्पल, और जो पैराग्राफ पहला लिखा उसी पैराग्राफ को 100 टाइम्स कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट. अब उस फाइल का साइज देखो, ये क्या कि जो फाइल मैंने कॉपी पेस्ट करके 5 MB की बना ली थी, वो फाइल आ गई 4 KB में, जो जनरली ब्लैंक फाइल का भी साइज यही होता है अप्रॉक्स. रिड्यूस हो गया, इतना ज्यादा हेवी कंप्रेशन कर दिया.
तो वो इसलिए हुआ क्योंकि सेम पैराग्राफ बार बार यूज हो रहा है. You can do compression. Have you done compression at your machine? Yes, sir. Okay, fine. Now, what is encryption? इंक्रिप्शन मीन्स जो ओरिजिनल डेटा होता है उसको किसी और फॉर्मेट में चेंज कर देना, लाइक कि दूसरा कोई उसको फिर डिक्रिप्ट ना कर पाए. दिस इज मेनली यूज्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पस. Okay, fine. Anybody else? Fine. Means in case of encryption, we convert our data into another form that cannot be read by unauthorized user. Yes, sir. Right? Yes. This is done with that in case of encryption. Encryption is basically used for the security purpose. And in this case, data is converted into some code, and this code is known as ciphertext or ciphertext. And for this conversion, we use different techniques, different protocols, different algorithms. Like for encryption, MD5, SHA, RSA, different techniques. And in these techniques, there is a difference. Like suppose one technique can support up to 128-bit encryption. Second technique can support up to 512-bit encryption. Third technique can support 4096-bit encryption. And there are some more techniques which can support up to 65,000-bit encryption. Why these variations? So making difficult to read data by the another user or Yes. unauthorized user. To make to make it more difficult to decode encrypted data. Fine. And for this encryption, some key concept is used. Key means just keyword, code. Suppose I'm just taking an example. A person's name is Raju, and I'm going to convert it into 1, 2, 3. This is a simple encryption. 1, 2, 3, 4 means R. For R, I have used 1, A 2, J 3, U 4. Raju, R-A-J-U, Raju. So then every R is known as a 1 in any encryption method. Sorry? सर लाइक सर अभी जैसे R को 1 बनाए एक इंक्रिप्शन मेथड में, तो उस इंक्रिप्शन मेथड में चाहे कितना भी R आएगा उसके बदले में 1 ही लिखा जाएगा. हाँ बिल्कुल. अभी जो मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जितना भी R आएगा उसके लिए 1 ही लिखा जाएगा. सर ऐसा भी हो सकता है किसी मेथड में कि वहां पे कुछ और आए, कभी कुछ और आए, कभी कुछ और आए. हाँ बिल्कुल हो सकता है और होता है. और ऐसा ही किया जाता है. इतना सिंपल एन्क्रिप्शन होगा तब तो कोई भी डिकोड कर लेगा. आई एम जस्ट पुटिंग एन एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल. नाउ जिसे पता होगा कि R के लिए 1 है, J के लिए ये, तो वो तो फट से डिकोड कर लेगा और डिकोड किया भी जा सकता है इस तरह के डेटा को. इसलिए एन्क्रिप्शन के केस में हम क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल, आई हैव कन्वर्टेड R into 1, then 1 will be again converted into A will again converted into hash will again converted into at the rate will again converted into Y.
multiple time change. If somebody has tried to decode my data, it's okay. I have done conversion for 10 times, 15 times, 20 times. Then it will be difficult for the decoder. Look, I have seen in a video that there is a data center in Mumbai, Mahape, and it supports 4096-bit encryption. And with this encryption technique, if a decoder or hacker would like to hack this or decode this data, in that case, per second, 10 million guesses are required. उसकी इतनी ह्यूज डेटाबेस होनी चाहिए जिसमें 10 मिलियन गेस, 10 लाख गेसेस वो एक सेकंड में कर सके, तब कहीं जाकर के उसके कोड को डिकोड कर पाएगा. Some simple computer is not valid for that. Sorry, Rohit, your voice is not properly clear. Sir, कोई भी sir simple सा computer like a handheld device is not capable for that. Right. तब तो कहीं जाकर के हम किसी डेटा सेंटर पे ट्रस्ट करते हैं कि हाँ, अगर हम वहां पे अपना कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा रखेंगे तो वो डेटा हमारा सिक्योर होगा. तो इस तरह के डिफरेंट एल्गोरिदम्स यूज होते हैं जिससे कि हम अपने डेटा को एनक्रिप्ट करके और सिक्योर तरीके से रखते हैं या नेटवर्क के ऊपर उसका ट्रांसमिशन करते हैं. ठीक है, तो दिस इज encryption and decryption. Compression, encryption, compression and encryption, these two are important feature of presentation. Fine. Now I'm going to move towards application. Now see, what is the use of application? In case of application, every activity that is done by a simple or a smart user can come to this layer, application, like creating files, deleting files, editing files, creating directories, sending mail, receiving mail, remote accessing, many more things. If you will talk, sir, just I am recording some voice, it's okay. It's a function of application. Sir, I'm taking some snaps, it's a function of application. I am sending mail, it's a function of application. I am accessing data from FTP, it's a function of application. Most of our tasks occur at application. Next slide. Again, your voice is not clear. Put your mic before the mouth. Sir, it is basically used to provide a user to get access or use a computer in a Yes, you can particular say. manner where. Yes, if you are doing some task at your machine, simple, you are doing task at application. Fine. If you are surfing internet, you are using Yes, sir. application. That's why most of protocols occur at the application. And just see the name of application layer protocol, like DNS, NetBIOS, and Telnet, MIME, SMTP, POP, IMAP, FTP,
HTTP, HTTPS, NTP, TFTP. All these are protocols of, all these are, okay. So now you have some idea about SMTP, POP, SSH, Telnet. These protocols are related to our basic function. So most of tasks are done at the application. That's why I have written some points. Application layer provides a facility by which user can forward several emails and also provides a storage facility. This layer allows user to access, retrieve, and manage files in remote computers, means remote accessing. It allows user to log on at remote host, yes, remote accessing. This layer provides services which include email, transferring files, distributing results to users, directory service, network resources, and so on. It provides protocol that allows software to send and receive informations and present meaningful data to users. Yes. Now you all can understand what is the function of application. The main thing about this application layer is that we have to understand different protocols. By understanding these protocols, you will have proper idea about the function of application. Fine. That's why I'm moving towards this. Now, I have already discussed a DNS protocol in your N+ paper. The main function of, yeah, I know it well. But as usual, I am repeating everything. What is the basic function of DNS? It is responsible for convert IP to domain IP. Yes, very simple. But there are some more concepts about it. And you have studied about DNS in your server paper also, Windows Server 2016. You have created your own DNS server. है कि नहीं? हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है. एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस के साथ DNS की रिक्वायरमेंट है. अब कोई कुछ बोलेगा ही नहीं. क्या था? अभी क्या क्या हो? चलो देखो, इन शॉर्ट देखो, नो डाउट. DNS का मेन फंक्शन तो नेम टू IP, IP टू नेम करना है, कन्वर्ट करना, ये एक रिजॉल्वर है. कैसे करता है? मैपिंग नेम्स टू एड्रेस. और इस मैपिंग के लिए वो क्या करता, अपने पास जो है वो रिकॉर्ड क्रिएट करता है, नेम टू एड्रेस मैपिंग. और नेम टू एड्रेस मैपिंग के लिए ही फॉरवर्ड लुकअप जोन बनता है. और उस फॉरवर्ड लुकअप जोन में एक तरफ नेम होता, डोमेन नेम, और दूसरे तरफ उससे रिलेटेड आईपी, जिसको हम होस्ट रिकॉर्ड कहते हैं.
IPv4 के केस में इसे A से रिप्रेजेंट किया जाता है और IPv6 के केस में इसे AAA से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर आता है मैपिंग एड्रेसेस टू नेम। अब एड्रेस को जस्ट उल्टा, पहले नेम टू एड्रेसेस था, अब नेम्स टू एड्रेसेस, एंड अब क्या है, एड्रेसेस टू नेम्स। इस केस में जो रिकॉर्ड क्रिएट होता है वो रिवर्स लुकअप जोन में होता है, एंड इस रिवर्स लुकअप जोन में इस रिकॉर्ड का नाम PTR होता है। PTR मींस पॉइंटर रिकॉर्ड। ठीक है। Now we will discuss something more about DNS and different protocols. These are very important for your exam and for your different career prospects. Fine. So you all have notes. Please go through it. It will help me to deliver my lectures in a fast manner. It will take hardly 2 or 3 classes more to cover your syllabus. Okay. Yes, sir. So now I'm just going to stop my session